Welcome back. Today we will discuss one fungal genus, Agaricus. In some old literature, it is also known by the generic name Saliota, and its common names are mushrooms, cucuruta, or khumb. Our today's learning objectives are: we will discuss about general introduction of mushrooms. It means its habit or habitat. Then we will discuss its thallus structure, its reproduction, and its life cycle. So before starting this, we will discuss about its classification. क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. इट बिलोंग्स टू डोमेन यूकैरिया. इट मींस यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें. किंगडम इसका फंजाई है. फाइलम इज बेसिडियोमाइकोटा एंड क्लास इज एगैरिकोमाइसिटीज. Order is Agaricales, family is Agaricaceae, genus is Agaricus, and the species that we will focus on is Campestris. So this is the classification of Agaricus. Next, introduction. If we talk about its common names, it is commonly known as mushrooms, कुकुरमुत्ता और खुम्ब. अगर इसकी हैबिट की बात करते हैं, सो इट शोज सेप्रोफेरिक हैबिट. दैट इज इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफेरिक. इट मीन्स कि ये ग्रो करता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. सो सेप्रोफेरिक इन इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोस्टली इट इज फाउंड इन द लिटर ऑफ ऑन द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट और इन द फील्ड लॉन्स. और ग्रोथ के लिए इसको जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, दैट इज़ मॉइस्ट शेडी कंडीशंस, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ग्रो करता है ये रेनी सीजन में. देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एडिबल स्पीशीज. सो मोस्टली जो हम मशरूम खाते हैं, सो दैट इज एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगैरिकस बाइस्पोरस, आल्सो नॉन एज एगैरिकस ब्रूनेसिन, जिसको कॉमनली बटन मशरूम भी कहा जाता है, जो हम कॉमनली खाते हैं मशरूम को. एंड दीज आर द मोस्ट कॉमनली स्पीशीज. दैन देयर इज अनदर स्पीशीज दैट इज एगैरिकस रोडोमैनी. सो दीज ऑल आर edible species of agaricus or mushroom. Then there are some species which are poisonous. They cause some gastrointestinal anomalies like Agaricus pleomyces, Agaricus sylvaticus, and Agaricus xanthodermus. This is the poisonous fungus. So these all species of Agaricus can cause some anomalies because they are poisonous in nature. Then we have one institute, that is Directorate of Mushroom Research, DMR. ये present है चंबा घाट में, जो कि सोलन में है. And it's a branch of ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research. और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, सो मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स. एंड देयर आर अबाउट 25 स्पीशीज, 25 स्पीशीज हैं एगैरिकस की, विच हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. So this is the brief introduction of mushroom. This is the most commonly eatable mushroom, Agaricus bisporus, commonly known as butter mushroom. When it gets matured, जब ज़्यादा mature हो जाता है, so इसके जो नीचे वाला portion है open आता है, it is brownish from this region. And this is Agaricus arvensis, commonly known as horse mushroom. And this is Agaricus sylvaticus, that is poisonous mushroom. नेक्स्ट इज थैलस स्ट्रक्चर. सो जो फंगल बॉडी है वो बनी होती है दो पार्ट से. एक पार्ट है वेजिटेटिव माइसीलियम, जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल में, और दूसरा है मशरूम प्रॉपर, और जिसको कहा जाता है बेसिडियो कार्प. कार्प टर्म इज रिलेटेड टू द फ्रूटिंग बॉडी.
So one part that is below ground जो कि वेजिटेटिव माइसीलियम है जो कि सॉइल में ग्रो करता है. देन द above ground part which is known as mushroom proper or basidio carp that is present above the soil surface. Next is mycelium. Mycelium जो है इट्स अ टिश्यू ऑफ फंजाई. अगर सेल की बात करते हैं फंजाई के, सो दैट इज नोन एज हाइफा. जब बहुत सारे हाइफा मिलते हैं दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज माइसीलियम. So the primary mycelium है, that is initially formed mycelium, that is formed by germination of basidiospores. So these are perfect stage spores which are produced in basidiomycota or in mushroom. और ये जो basidiospores हैं haploid हैं, so they may be either of plus strain or they may be either of minus strain. So haploid basidiospore will germinate and give rise to this primary mycelium. So this is the below ground portion, vegetative portion, and this upper part is the fruiting body which is known as Basidio carp or mushroom proper. Then primary mycelium जो होता है that is haline. Haline means some sort of pale in color. Septate होता है, septa present होते हैं, proper compartments present हैं, and monokaryotic. मोनो मीन्स सिंगल, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. सो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्राइमरी माइसीलियम में. देन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियो कोटा के मेंबर्स का, दे बियर अ स्पेशल टाइप ऑफ पोर इन देयर सेप्टम विच इज़ नोन एज डॉलीपोर. जो डॉलीपोर सेप्टम है इसके मार्जिन जो होते हैं दैट इज गार्डेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज पेरिंथोजोम ऑन बोथ द साइड. So we have discussed already about this dolipore septum. This is the typical feature of this Basidiomycota. Next, if we talk about mycelia, जो एगेरिकस है उसमें 3 तरह के माइसीलियम होते हैं. वन इज़ प्राइमरी माइसीलियम दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए होता है. देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी माइसीलियम, वो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी माइसीलिया. देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ माइसीलियम दैट इज टर्शियरी माइसीलियम विच रिप्रेजेंट इन द फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम खाते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफे विच आर नोन एज टर्शियरी माइसीलियम्स. लेट्स डिस्कस. Firstly, primary mycelium is short-lived and it is replaced by the secondary mycelium, और इसको डाइकैरियोटिक माइसीलिया भी कहा जाता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलिया. 2 प्राइमरी माइसीलिया जब फ्यूज़ करेंगे सो इट विल गिव राइज टू दिस सेकेंडरी माइसीलियम. एंड दीज 2 प्राइमरी माइसीलिया आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, दैट इज़ वन इज़ ऑफ प्लस स्ट्रेन, एक होगा प्लस स्ट्रेन का, दूसरा होगा माइनस स्ट्रेन का. So in this picture we can see here this is the hypha which contains single nucleus. This is monokaryotic hypha, and this one is the dikaryotic hypha containing 2 nuclei. So ये जो dikaryotic hypha है ये बनता है by the fusion of 2 primary mycelium of opposite strain. One is of plus strain and other is of minus strain. So इसके fusion से बनता है secondary mycelium और इसको कहा जाता है dikaryotic mycelia because it contains 2 nuclei of opposite strains. The next जो हाइफे हैं सेकेंडरी माइसीलियम के, they twist together and give rise to hyphal cords जिसको कहा जाता है rhizomorphs, and they will give rise to the fruiting body. ये जो स्ट्रक्चर rhizomorph ये बनाएगा fruiting body बाद में जिसको कहा जाता है Basidio carp. So in this picture we can see here ये है Basidiospore जो कि माइनस स्ट्रेन का है, एंड दिस इज द बेसिडियोस्पोर ऑफ प्लस स्ट्रेन. ये बनाएगा प्राइमरी हाइफा ऑफ प्लस स्ट्रेन. इट विल फॉर्म प्राइमरी हाइफा ऑफ प्राइमरी माइसीलियम ऑफ दिस माइनस स्ट्रेन. दोनों ही हाइफे अपोजिट स्ट्रेन के फ्यूज़ करेंगे, दे विल गिव राइज टू दिस डाइकैरियोटिक हाइफा और दिस इज नॉन एज सेकेंडरी माइसीलियम. इन फ्रूटिंग बॉडी ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है दे विल गिव राइज टू, दे विल अरेंज compactly and will form the fruiting body and give rise to the third type of mycelium जिसको कहा जाता है tertiary mycelium. secondary mycelium भी combine करके
कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है राइजोमॉर्फ, और राइजोमॉर्फ विल गिव राइज टू दिस फ्रूटिंग बॉडी जिसको कहा जाता है बेसिडियो कार्प. So as the rhizomorph grown in circular colonies, so जो rhizomorphs हैं ये ग्रो करते हैं सर्कुलर कॉलोनीज में, एंड इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जो मशरूम्स हैं वो भी इमर्ज होते हैं इन सर्कुलर रिंग्स, और इन रिंग्स को कहा जाता है फेयरी रिंग्स. देयर आर सम we can say stories that some fairies will come on these rings and they will dance on these rings. So that's why these are known as fairy rings. जो mushrooms हैं वो क्या करते हैं circular colonies में, that we'll see in next picture. So the successive rings of fruiting bodies are produced year after year. हर साल एक सक्सेसिव रिंग्स बनती है मशरूम्स की इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर, मीन्स अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ, और कॉलोनी का साइज बढ़ता जाता है ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज जो ये राइजोमॉर्फ्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इन द सर्कुलर एरिया वी कैन से. हर साल इसमें सर्कुलर कॉलोनीज में मशरूम्स प्रोड्यूस होते हैं इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर, दैट इज अवे फ्रॉम सेंटर. Mycelium fruiting bodies are compactly arranged, and जो mycelia fruiting body में होता है उसको बोलते हैं tertiary mycelia, that I have already discussed. So these are the images which shows these fairy rings. So these mushrooms grow in circular areas in centrifugal manners. It will start from the center. हर साल इसमें जो rings हैं वो ईयर आफ्टर ईयर सेंट्रीफ्यूगल मैनर में बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस राइजोमॉर्फ्स विच आर परसिस्टेंट. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी द कॉलोनीज ऑफ मशरूम्स विच ग्रोज इन सर्कुलर स्टाइल वी कैन से. Next is reproduction in Agaricus. So it reproduces vegetatively, asexually, and sexually. Vegetative reproduction is by fragmentation, और जो fragmentation होती है that is by death and decay of its mycelium, and they will give rise to the new fresh mycelia, and also by the fragmentation of mycelium. Then asexual reproduction, it occurs with the help of chlamydospores, which are thick-walled spores. ये produce होते हैं on lateral or in the intracalary position. Lateral means side में साइड वाली पोजीशन में बनते हैं, या फिर इंटरकैलोरी मीन्स माइसीलियम के बीच में बनेंगे. दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स एंड ऑन जर्मिनेशन दे विल गिव राइज टू द सेकेंडरी हाइफा बनाते हैं. एंड देयर आर ऑइडियाज, दे आर आल्सो फॉर्म्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड हैव देयर रोल इन सेक्शुअल फंक्शन और इन डिप्लोडाइजेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एगैरिकस. सो एगैरिकस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बनते नहीं हैं. सो इट इन्वॉल्व्स सोमैटोगैमी, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली सोमैटोगैमस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्यूडोगैमस. मीन्स इसमें कोई गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स नहीं बनते हैं. दो वेजिटेटिव सेल फ्यूज़ करते हैं, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर. जो प्राइमरी माइसीलियम है दो अपोजिट स्ट्रैंड के वो फ्यूज़ करते हैं, दे विल गिव राइज टू सेकेंडरी माइसीलियम. नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट एंड देयर फंक्शन हैज़ बिन टेकन ओवर बाय द सोमैटिक हाइफे. जो सोमैटिक हाइफे और वेजिटेटिव सेल्स हैं वो ही सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं. एंड देयर आर हेट्रोथैलिक, मोस्ट ऑफ स्पीशीज आर हेट्रोथैलिक, मीन्स दो डिफरेंट स्ट्रेन के थैलस में फ्यूजन होगा, दो डिफरेंट स्ट्रेन के वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज़ करेंगे. But there are some species like Agaricus bisporus which is homothelic. जो sexual reproduction है it involves 3 steps. पहला step है plasmogamy followed by dikaryoticization. Then there occurs fusion of both the nuclei जिसको बोलते हैं हम karyogamy, and finally the meiosis. So plasmogamy involves the fusion of 2 cells. So this is the first step in sexual reproduction in case of Agaricus. दो वेजिटेटिव हाइफे जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड हाइफे, अपोजिट स्ट्रेन के दो हाइफे फ्यूज़ करेंगे. इन केस ऑफ हेट्रोथैलिक और जो होमोथैलिक है दोनों ही सेम माइसीलियम के ही दो सेल्स फ्यूज़ करेंगे.
they come in contact with each other and fuse. This will result in the formation of dikaryotic hypha, means it will contain two nuclei, और जो दोनों nuclei होंगे वो fuse immediately नहीं करेंगे. So each such fusion results in binucleate or dikaryotic cell. Dikaryotic cell is also formed by transfer of nuclei to the daughter cell with the help of some special type of connection जिनको कहा जाता है clamp connections. Then the dikaryotic cell by successive division give rise to binucleate or dikaryotic mycelium. जैसे ही ग्रो करता है ये सेल, it will form the secondary mycelium जिसको कि dikaryotic mycelium भी कहा जाता है. And this dikaryotic mycelium is perennial and produces characteristic fruiting body of mushroom year after year. Year after year. Perennial means which grows for several years. सो ये जो हाइफे हैं ये ग्रो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट्स वाई दिस मशरूम्स आर फॉर्म्ड इन रिंग्स, सक्सेसिव रिंग्स ईयर आफ्टर ईयर. Then second step is karyogamy. It is the fusion. It is the second step in sexual reproduction, and this step is delayed. ये immediately नहीं होता है dikaryoticization के बाद. It will take some time. And it takes place in the young basidium. Basidium is a structure जिसके अंदर basidio spores बनेंगे. So in this step it involves fusion of two nuclei. जो dikaryotic hypha है उसके जो दो nuclei दोनों fuse हो जाएंगे. This step is known as karyogamy. Then the third step is meiosis. It is the reductional division. It is the third step in sexual reproduction. ये भी basidium के अंदर ही होता है during the formation of basidio spores. बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के रिजल्ट से. दीज आर द हैप्लॉइड स्पोर, हम डिस्कस कर चुके हैं. सो कैरियोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस. सो मियोसिस क्विक होती है जैसे ही फ्यूजन होगा न्यूक्लियाई का, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा. सो दैट डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज converted into haploid one by the process of meiosis, and this results in the formation of these basidiospores which are haploid. Thus the basidiospores formed after meiosis are haploid. इसलिए जो basidiospores बनते हैं वो haploid होते हैं. They may be either of plus chain or they may be either of minus chain. Then next we will discuss about how this fruiting body basidiocarp और sporophore भी कहा जाता है इसको, ये कैसे बनता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है. So there are various steps. First, जो बेसिडियोकार्प की डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होती है सबटेरेनियन माइसीलियल स्ट्रैंड से. सबटेरेनियन माइसीलियल स्ट्रैंड जो कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है राइजोमॉर्फ. राइजोमॉर्फ मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सो जो सबटेरेनियन माइसीलियल स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको राइजोमॉर्फ बोलते हैं, उनसे स्टार्ट होती है डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प. It will give rise to tiny pin head structures. पिन के हेड की तरह, जैसे पिन होता है पिन के हेड की तरह स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे. And these structure will come out of the soil surface जैसे ही conditions favorable होती हैं. And these are primodia or we can say initials of basidiocarp. जो fruiting body बनती है उसके initials हैं ये pin head like structure जो कि rhizomorph से बाहर निकलते हैं. So this is the picture which shows various developmental stages of this basidiocarp fruiting body. So initially जो first step है, this structure is known as rhizomorph जो कि soil में present होता है. It will give rise to this pinhead like structures which comes out of the soil surface under favorable conditions, and this is also known as primodia of basidiocarp. और ये जो प्राइमोडिया है ये एनलार्ज होगा साइज में into a round or ovoid structure and represents the button stage. Button stage को represent करते हैं, for example this one. So it represents the button stage. जो इसका head है वो enlarge होगा, round होगा, ovoid, and this stage is known as button stage in case of mushroom development. और basidiocarp की development की stage जो ये वाली है इसको कहा जाता है button stage. In this stage,
जो डिफ्रेंसिएशन है पाइलियस की और स्टाइप की, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. सो दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज स्टाइप, और जो ऊपर वाला पोर्शन है हेड वाला पोर्शन दिस इज नॉन एज पाइलियस. सो इस स्टेज में इनकी डिफ्रेंसिएशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है. दिस हेड रीजन इज पाइलियस एंड दिस वन stalk region is stipe. Then a ring-like cavity developed at the junction of stalk and pileus, and this region is known as gill chamber. जहाँ पे इनका जंक्शन है स्टाइप और पाइलियस का, उस रीजन में एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, दिस वन, एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज गिल चैम्बर. इसको कहा जाता है गिल चैम्बर, दिस वन. नेक्स्ट एट दिस स्टेज जो बेसिडियो कार्प है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, बट जो यंग पाइलियस होती है, जो पिन हेड की तरह स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द स्टॉक. जो स्टॉक है उसके साथ कनेक्टेड होती है बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है वेलम. So that head portion is connected with the stalk-like structure with the help of a membranous structure which is known as velum or inner veil. Due to rapid absorption of water and food, जो stalk है वो further elongate करती है, उसका size increase होता है. And जो button है, that is head portion, that projects above the ground due to elongation of the stalk-like structure from the soil surface and elongates considerably. So this is the picture which shows these pinhead-like structures. They arise from this root-like structure जिसको rhizomorph कहा जाता है, उससे ये pinhead की तरह structures arise होते हैं. और जो ये stalk की तरह structure है ये elongate होता है by the absorption of food material and it projects this head portion of button-like structure above the soil surface और ये grow करता रहता है. And the membranous structure जो join करता है cap और stalk को जिसको कहा जाता है velum, this is called velum or inner veil. Next, as a result of growth of such button, जो button है initially जब इसकी growth होती है it becomes umbrella like structure. जैसे umbrella होता है वैसे इसका structure बन जाता है and umbrella like couple structure. And velum, जो velum है, जो membranous structure है वो this is the membranous structure. ये जो structure है इसकी growth से ये break down हो जाता है due to enlargement of cap and elongation of stalk. जो velum है वो break down हो जाता है. इसके ब्रेकडाउन से एक पोर्शन है विच इज़ अ फर्टाइल पोर्शन जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसको कहा जाता है हाइमीनियम और इसको कहा जाता है गिल्स. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो ये पोर्शन है ये इसकी ग्रोथ से एक्सपोज हो जाता है जैसे ही वेलम ब्रेकडाउन होता है. सो दिस पोर्शन दैट इज़ गिल्स ये एक्सपोज हो जाता है एंड this type of development of Basidio carp is known as hemiangiocarpic. Hemiangiocarpic means initially जो ये hymeneum है, जो ये fertile portion है, it is closed or we can say covered by membranous structure and after maturity it gets exposed और maturity के बाद ये structure expose हो जाता है and after that it will produces spores. Spores को liberate करेगा. Next is structure and anatomy of Basidio carp. So इसके हर एक पोर्शन को we will discuss in detail. So the mature fruiting body को हम differentiate कर सकते हैं mainly 3 parts में. First one is stipe, that is the stalk-like structure. Then pileus and annulus. This ring-like structure is known as annulus and this umbrella-shaped cup-like structure is known as pileus. So firstly stipe. जो स्टाइप है सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका. सो दिस इज द बेसल पोर्शन ऑफ बेसिडियो कार्प एंड इन दिस रीजन जो हाइफे होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं. जो फंगल सेल्स हैं दे रन लॉन्गिट्यूडनली एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइफे इन द स्टाइप रीजन. और इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं. द सेंट्रल वन
इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज सेल जिसको कहा जाता है मेडुला, और जो पेरिफेरल पोर्शन है विच इज़ मेड अप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज सेल जिसको कहा जाता है कॉर्टेक्स. So, firstly, the outer region that is made up of compactly arranged hyphae जिसको कहा जाता है cortex, and the central portion or inner space जिसमें loosely arranged hyphae होते हैं, central portion which is known as medulla. So this is all about anatomy of this type. Next structure is Pileus. This is the umbrella-like structure. So at the top of this stipe or stalk-like structure, there presents a broad umbrella-shaped cap, जिसको कहा जाता है Pileus. So this is the Pileus. From the underside of Pileus, there are approximately 300 to 600 gills. इसमें लगभग 300 से 600 gills होते हैं. This is the picture which shows the gills, और लैमिले भी कहा जाता है इनको. गिल्स आर वाइट और पिंकिश इन यंग स्टेज. यंग स्टेज में ये पिंक और वाइटिश होते हैं, बट जैसे जैसे मेच्योर होते हैं दे बिकम्स ब्राउन और पर्पलिश ब्लैक एट मेच्योरिटी. ब्राउन कलर ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इन दिस पिक्चर देयर आर ब्राउनिश इन कलर. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हाइफे फ्रॉम स्टाइप. जो स्टाइप से हाइफे जाते हैं उसी के एक्सटेंशन से बनता है. देन थर्ड पोर्शन इज गिल्स. ये गिल्स बनते हैं लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड पैरेलल हाइफे से विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पाइलियस. पाइलियस के जो लॉन्गिट्यूडनल हाइफे हैं उनसे उनकी ओरिजिनेशन से बनता है पाइलियस दिस गिल्स. और जो ट्रांसवर्स सेक्शन है टीएस है गिल्स का, ये शो करता है 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. Next, gills consist of 3 layers. Central is trama, which is followed by subhymeneum or hypothecium, which is again followed by the fertile layer, which is known as hymeneum or thecium. So first trama, it is the central sterile part of the gill. ये गिल का जो central portion है, sterile portion, उसको कहा जाता है. And it is made up of loosely arranged interwoven mass of plankton-chymatous tissue. Loosely arranged plankton-chymatous tissue जो होता है वो बनाता है इस portion को. So in this picture we can see here this middle portion which is made up of these loosely arranged interwoven plankton-chymatous tissue. In this picture we can see here. So this central region is known as trama. Then this region is followed by the growth of these trama hyphae, जो बाहर की तरफ को इसकी ग्रोथ होती है. So ये जो लेयर है इसके बाहर वाला लेयर इसको कहा जाता है सबहाइमेनियम और हाइपोथीशियम. So it is made up of compactly arranged cells. ये लेयर compactly arranged cells से बनी होती है and forms the boundary of trama. So on both the sides we can see here up to here, and on this side this compactly arranged layer of compactly arranged cells is known as subhymeneum. It is made up of isodimetric cells and this layer is known as subhymeneum. Then third layer, which is a fertile layer, it is known as thecium. It is the outermost layer and lies on both sides of subhymeneum. So in this picture we can see here जो ये वाली लेयर है बाहर की तरफ on both the side of subhymeneum इसको कहा जाता है hymeneum. It is composed of cells which are arranged in palisade-like manner. Palisade जैसे हम मेसोफिल में पढ़ते हैं, they are compactly arranged cells. So ये जो लेयर है compactly arranged palisade-like cells से बनी होती है. It contains 2 types of cells. 2 तरह के cells होते हैं इसमें. One is fertile cell जिनको कहा जाता है Basidia. They will produce the Basidio spores, and other type of cells जिसके ऊपर जो spores produce नहीं करेंगे like this one, ये वाले जो cells हैं इनको कहा जाता है paraphysis. They are sterile. जो Basidia हैं इन sometimes जो sterile cells हैं ये भी enlarge हो जाते हैं, बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं beyond the which will surpass this Basidia, और बेसीडिया से भी बड़े हो जाते हैं ये. इसको कहा जाता है उस केस में सिस्टीडिया. सो पैराफाइसिस जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड दे विल प्रोजेक्ट बियॉन्ड द बेसीडियल लेयर. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिस्टीडिया.
and each basidia will produce 4 basidiospores. So this is the unique feature of basidiomycota. जो एस्कस थे, एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, while in case of basidia they will produce 4 basidiospores. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस इज द बेसिडियम. इसके ये प्रोड्यूस कर रहा है 4 बेसिडियोस्पोर्स. दैट विल डिस्कस हाउ द डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोस्पोर्स स्टार्ट इन नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम. बेसिडियम कैसे डेवलप होता है एंड हाउ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड. सो द बेसिडिया आर स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज एज वी नो. और जो यंग बेसिडिया होते हैं ये अराइज होते हैं टर्मिनली बाय द बाइन्यूक्लिएट सेल्स ऑफ सब हाइमेनियम लेयर. जो सब हाइमेनियम लेयर हमने देखी थी उसके जो टर्मिनल सेल्स हैं विच आर बाइन्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं अपोजिट स्ट्रैंड के, उनके टर्मिनल पोर्शन पे बनते हैं बेसिडिया. एज द बेसिडियम ग्रोज, जैसे जैसे बेसिडियम ग्रो करता है, जो 2 न्यूक्लियाई हैं दे विल अंडरगो फ्यूजन, और फ्यूज़ करके वो बनाएंगे सिन कैरियन और डिप्लॉयड न्यूक्लियस. दिस इज नॉन एज कैरियोगेमी. एंड दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस जैसे ही बनता है इमीडिएटली इट इज़ फॉलोड बाय मियोसिस. सो जैसे ही सिन कैरियन बनता है तुरंत उसके बाद मियोसिस हो जाती है. एंड एज वी नो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. और जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं दे will cover the mass of cytoplasm और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे 4 बेसिडियोस्पोर्स में. साइमल्टेनियसली 4 नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द टॉप ऑफ बेसिडियम, जो हमने प्रीवियस पिक्चर में देखी थी. 4 ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स भी अराइज होते हैं हर बेसिडियम से. एंड दीज आर नोन एज स्ट्रिगमेटा. इनको कहा जाता है स्ट्रिगमेटा. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर, जैसे ही यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, दे विल अंडरगो fusion. So this is karyogamy, single nucleus बन जाएगा, then it is followed by meiosis as they have written here. In this picture we can see here it results in the formation of 4 haploid nuclei, जिसमें कि 2 + 10 के होंगे और 2 - 10 के होंगे. And at the tip of this there are some tube like projections. 4 ट्यूब की तरह projections arise होंगी बेसिडियम के टिप से. इनको कहा जाता है स्ट्रिगमेटा. And at the tip of these stigmata they will form a mass, circular mass, जो फाइनली और जो न्यूक्लियाई हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे. एंड ईच दिस मास गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिडियोस्पोर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज बेसिडियम. सो द स्टिग्मेटा स्वेल्स एट देयर टिप्स. इनके टिप्स स्वेल्स कर जाएंगे एंड ईच फॉर्म्स अ स्मॉल सिंगल बेसिडियोस्पोर बाय बडिंग. Then in this way 4 basidiospores are formed in each basidium. So एक basidium 4 basidiospores produce करता है. Out of 4 basidiospores I have already told you there are 2 of +10 and 2 are of -10. In case of Agaricus brunescens only 2 are formed. ये exceptional case है. Agaricus brunescens इस केस में सिर्फ 2 ही basidiospores बनते हैं. So this is a unique case. Otherwise the development is like this that we have discussed. Basidiospores जब यंग होते हैं वो अनपिगमेंटेड होते हैं, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है. बट एट मेच्योरिटी दे बिकम्स ब्राउनिश और ब्लैकिश इन कलर. पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं मेच्योरिटी में. और जो मेच्योर बेसिडियोस्पोर है दैट इज अटैच्ड टू द स्ट्रिगमेटा ओब्लिकली अटैच्ड होता है. और उसमें एक माइन्यूट सी प्रोजेक्शन भी होती है जहाँ पे अटैच होता है एक साइड पे, जिसको कहा जाता है हाइलम और हाइलर अपेंडिक्स. एंड दिस मेच्योर बेसिडियोस्पोर्स, जो मेच्योर बेसिडियोस्पोर्स हैं ये डिस्चार्ज होते हैं एक स्पेशल मेथड से, एक मैकेनिज्म से, जिसको कहा जाता है फ्लूइड ड्रॉप मैकेनिज्म और वाटर बबल मेथड. इस मेथड में क्या होता है, एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेवलप होती है हाइलम के पास. ये कवर की होती है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से. दिस लिक्विड ड्रॉप इज कंटेन्ड इन अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर होती है. जैसे ही ये मेम्ब्रेन रप्चर होती है एंड इट रिलीजेस प्रेशर एट द बेस ऑफ बेसिडियोस्पोर, और ये प्रेशर रिलीज़ करती है बेसिडियोस्पोर के बेस पे, जिसकी वजह से बेसिडियोस्पोर्स वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं. सो बेसिडियोस्पोर्स आर शॉर्ट हॉरिजॉन्टली ये नीचे गिरते हैं. एंड दे आर लाइट इन वेट एंड आर कैरिड अवे बाय विंड. ये बहुत ही लाइट वेट के होते हैं एंड विंड
blown them away or they fall on suitable substratum, and after some time they will germinate और बनाएंगे primary mycelium. Next, after falling on suitable substratum, basidiospore germinate करते हैं and produce करते हैं primary mycelium, which is monokaryotic क्योंकि एक ही nucleus present है. That may be of either plus strain or either of minus strain. So, in this picture we can see here, this is the basidiospore. जो ये basidiospore है, this is the total life cycle of this agaricus. ये जो basidiospores हैं ये रिलीज होते हैं वाटर ड्रॉप मेथड से. फ्लूइड ड्रॉप मेथड जो हमने पढ़ा था, इसके बेस पे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस होती है हाइलम के पास, विच इज़ कवर्ड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन. जैसे वो मेम्ब्रेन रप्चर होती है, प्रेशर रिलीज करती है इसके बेस पे बेसिडियोस्पोर्स की, ये रिलीज हो जाता है हॉरिजॉन्टली एंड इट इज़ लाइट इन वेट, कैरिड अवे बाय विंड. जैसे सूटेबल हो सबस्ट्रेटम पे फॉल करता है, ये जर्मिनेट करेगा. जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे, इज अ प्लस स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर एंड दिस इज माइनस स्ट्रेन एंड दिस इज प्लस स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर्स. ये जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस प्राइमरी हाइफा और प्राइमरी माइसीलियम, और वो होगा प्लस स्ट्रेन का विच इज़ फाउंड बाय द प्लस स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर एंड माइनस strain hypha, which is formed by the germination of minus strain Basidiospore. Then the mycelia of two different strains fuse, that we have already discussed. It results in the formation of secondary or dikaryotic mycelium. And after the fusion of two somatic cells, they will give rise to this dikaryotic condition. It is also known as somatogamous copulation or heterothallic condition. However, जो होमोथैलिक स्पीशीज़ हैं उसमें एक सिंगल बेसिडियोस्पोर होता है दैट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी माइसीलियम. वही सेकेंडरी माइसीलियम बना सकता है. एंड द सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप्स इनटू द बेसिडियोकार्प, दैट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम खाते हैं. सो दिस पिक्चर शोज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एगारिकस. सो ये जो गिल्स होते हैं जो हमने पढ़ा, 3 लेयर्स हैं इसमें. सेंट्रल है इसमें trauma, then outer are subhymenium on both the side, then outermost layer is hymenium जिसमें present होते हैं basidium, और sterile cells को बोलते हैं paraphysis. जो basidium है उसके अंदर dikaryotic condition में nucleus present होते हैं, and after formation of this basidium it will undergo karyogamy, fuse हो जाएंगे, then it undergo meiosis होगी और उसके रिजल्ट से 4 न्यूक्लियस बनेंगे and 4 nuclei will transform into this 4 haploid basidiospores. वो रिलीज होंगे and they will germinate to form the hypha. So this picture shows life cycle of this agaricus. In this picture we can see here, this is the full-fledged thallus of agaricus. It consists of this rhizomorph, then stipe, and this ring-like structure annulus, and this umbrella like structure that is Pileus. जो Pileus है इसमें present होते हैं gills consist of 3 parts. Trauma, central portion is trauma, then subhymenium and hymenium. जो hymenium है fertile layer है, इसके tips में बनते हैं basidia. जो basidia हैं, basidia बनाते हैं basidiospores. basidium के अंदर dikaryotic condition होती है and when they become mature, ये दोनों ही nuclei fuse कर जाएंगे. They will form this diploid nuclei. It will undergo meiosis हो जाएगी immediately and it will give rise to the 4 haploid spores. Out of 4, 2 होंगे minus 10 के और 2 होंगे plus 10 के. Germinate करेंगे to form the primary mycelium. जो primary mycelium है it will fuse एक minus 10 का, एक plus 10 का, और ये बना देंगे एक dikaryotic हाइफा जिसको सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं. ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है इट विल फॉर्म दिस राइजोमॉर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इससे अराइज होते हैं पिन हेड की तरह स्ट्रक्चर्स जो कि मशरूम है, बटन स्टेज भी बोलते हैं इसको. एंड इट विल ग्रो बाय अब्जॉर्बिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर्म्स द फुल फ्लेज मशरूम और agaricus. So this is all about the life cycle of this agaricus. Hope you will understand it. And if you have any questions and queries, you can ask in the comment section and you can suggest me some improvements also. Thank you. Have a great day.